Yes, students, what is the broader meaning of democracy? So, we have considered the meaning of democracy in a limited and descriptive sense. We have understood democracy as a form of government. We have understood a democracy as a form of government. This way of defining democracy helps us to identify a clear set of minimal features that a democracy must have. In the previous class, I had explained that this feature, whatever feature you have read in this chapter of democracy, that differentiate the form of government from other form of government. डेमोक्रेसी को दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से क्लियरिफाई करता है, ठीक है, कि डेमोक्रेसी क्या है, ये दोनों ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ये सेपरेट करता है, ठीक है. The most common form that democracy takes in our time is that a representative democracy. You have already read about this in the previous classes. In the country we call democracy, all the people do not rule. Yes, as you know that representative democracy means government which is run by the people, run by the elected people. That elected people are called representative. They run the government, they take decisions on the behalf of the people, they work for the people. That's why they are called representative democracy. So this type of democracy is famous in all over the world. ठीक है, सबसे ज्यादा जो डेमोक्रेसी फेमस है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, because a country which are having a big population is not easy for it's not easy to manage that each and everyone sit together and take a decision. So most of the country this things has been accepted, that is representative democracy. In the country we call them all the people do not rule. A majority is allowed to take decision on the behalf of the people. Okay, some people are elected one and they take decisions on the behalf of the people. Okay, even the majority does not rule directly. The majority of the people rule through their elected representatives. Okay, majority if any group in the society is in majority, that majority cannot rule the government. They choose their representative, they elect their representative, and that elected representative work for the welfare of that people. ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव जो चुनते हैं वही शासन चलाते हैं, वही गवर्नमेंट चलाते हैं. Okay, so this became necessary because the modern democracy involves such a large number of people that is physically impossible for them to sit together and take a collective decisions. So, करें कि modern democracy में इतने जो big populations को physically एक जगह पर ला करके और तब decision लेना ये impossible है, ठीक है. So ये collective decisions लेना एक जगह पे impossible है. That's why representative democracy has been adopted by different country of the world. ठीक है, वर्ल्ड के different countries इस type of democracy को adopt कर रहे हैं. Even they could, the citizen does not have the time, the desire or the skills to take part in all the decisions. कहते हैं एक तो सारे लोगों को physically assemble करके decisions लेना संभव नहीं है. दूसरी बात है कि अगर ऐसा कर भी लिया जाए, सबको सारे लोगों को इकट्ठा कर भी लिया जाए, तो सारे सिटीजन्स के पास टाइम नहीं है कि वो इकट्ठा हो. दूसरी बात कि उनकी कोई इच्छा भी नहीं हो सकती, ये भी हो सकता है. और तीसरी बात कि हो सकता है उनमें वो स्किल नहीं हो जिस स्किल के आधार पर बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं. तो ये सारे भी बातें हो सकती है. Just give a clear but minimum understanding of democracy. This clarity help us to distinguish democracy from non-democracy. ये हमको क्लियर और मिनिमम जानकारी देता है डेमोक्रेसी के बारे में कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, एक ऐसा गवर्नमेंट है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ज्यादातर कंट्री जो है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अपनाए हुए हैं, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है उसी के द्वारा शासन चलाना संभव है, वरना सारे लोगों को एक साथ बैठा करके और फिर शासन चलाना ये संभव नहीं होता.
दिस क्लैरिटी help us to distinguish democracy from non democracy. ठीक है, इतना तो क्लियर है कि डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्टेड पीपल पार्टी जो है वो डिसीजंस लेते हैं, तो इससे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री से हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मान लो कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, पहली बात है कि दे वर नॉट इलेक्टेड वन, तो एक डिफरेंसेस तो आप डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक में निकाल सकते हो। तो इसे हम कह सकते हैं कि क्वालिफाई, जिससे अगर ऑटोक्रेटिक रूल है, अगर मोनार्की है, तो अगर ऑटोक्रेटिक रूल है, अगर मोनार्की है, तो वहां पे डिसीजंस आर टेकन बाय सिंगल पर्सन, सो देयर इज नो नीड टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द पीपल। ठीक है, वहां पे सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है, वहां पर वन मैन वन डिसीजंस है। इसलिए ये जो है ये नॉन डेमोक्रेसी से डिफरेंस क्लियर होता है, बट इट डज नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी। चलो हम डेमोक्रेसी एंड नॉन डेमोक्रेसी के बीच डिफरेंसेस तो कर लेते हैं, क्या हम डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी के बीच डिफरेंशिएट कर सकते हैं? सो इट डज नॉट allow us to see the operation of democracy beyond government. For this, we need to turn to broader meaning of democracy. हम इसकी डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी के लिए, तो हमें इसके लिए ब्रॉडर मीनिंग की जरूरत है। हम थोड़ा डिटेल में जाने कि डेमोक्रेसी क्या है। Sometimes to use democracy for organization other than the government. Just read it. We are a very democratic family. Yes, I'd explain about that very democratic family. It means everyone is having equal rights. है ना? Whenever a decision has to be taken, we all sit down, arrive at a consensus. My opinion matter as much as my father. मेरी फैमिली डेमोक्रेटिक फैमिली है। जब हम लोग डिसीजंस लेते हैं, then we sit together, हम लोग सब एक साथ बैठते हैं, एक साथ बैठ करके और फिर कोई मिलजुल के कोई डिसीजंस लेते हैं। So my opinion is that much valuable as the opinion of my father. So it's a democratic family. I don't like teachers who do not allow students to speak and ask questions in the class. I would like to have teachers with democratic temperament. Democratic temperament का क्या मतलब क्या है? Democratic temperament means everyone is having equal rights. Each and every students are free in the class to ask any question. If such type of things will happen, that you can say that democratic temperament in the class. But if the teacher restrict to ask question to student, it's not a democratic temperament, is it? तो सभी को जहाँ पर अपनी बातों को कहने का अधिकार है। You have seen the conversation between Madam Luande and the other student. That class was democratic class. वो क्लास डेमोक्रेटिक क्लास था, जहाँ पे हर बच्चे अपनी अपनी थिंकिंग से जो उनके माइंड में आ रहा था, देवर अप्लाइंग, वो बोल रहे थे। सो ये डेमोक्रेटिक क्लास, डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट इसी को कहेंगे। वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर decide everything in his party, how can they talk of democracy? If one person decide everything in a family, that we can't say that a democracy. Democracy का मतलब है कि हर किसी को एक समान अधिकार मिलना चाहिए। This way of using the words democracy go back to the basic sense of a method of taking decisions. Democratic decision involve consultation with and consent of all those who are affected by that decisions. Democratic decisions वो है जिसमें कि जो भी उस डिसीजन से अफेक्टेड हो, उन सब का कंसल्टेशन हो, उन सब का कॉन्सेंट हो, सब लोग मिलजुल करके आपसी सहमति से जब डिसीजन लेंगे तो वो डेमोक्रेटिक डिसीजन होगा। तो कह रहे डेमोक्रेटिक डिसीजन में वो सारे लोग शामिल होने चाहिए जो कि जो कि उससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, जो लोग उससे प्रभावित होते हैं उस सब का कंसेंट होना चाहिए, उस सब का कंसल्टेशन होना चाहिए, एंड देन डिसीजन शुड बी टेकन। ठीक है, दोज who are not powerful have the same say in taking the decision as those who are powerful. कह रहे कि जो लोग पावरफुल नहीं है उनको भी उतना ही कहने का अधिकार होना चाहिए जितना कि जो पावरफुल नहीं है उनको। ठीक है, जो लोग पावरफुल है उनको भी अधिकार बराबर होना चाहिए वैसे लोगों को जिनके जो कि पावरफुल नहीं है। तो everyone should have equal rights
टू टू शेयर देयर ओपिनियन। ठीक है, तो जब ऐसा हो कि सब परिवार में सभी लोगों को या कोई भी डिसीजन में जब सारे लोग शामिल हो, तो वैसे डिसीजंस को हम डेमोक्रेटिक डिसीजंस कह सकते हैं। और इस तरह के डिसीजंस जो है दैट कैन बी अप्लाइड इन अ गवर्नमेंट और ए फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डेमोक्रेटिक डिसीजन सिर्फ कंट्री के लिए नहीं होता। अगर फैमिली में एवरीवन इज हैविंग राइट, दैट यू कैन से डेमोक्रेटिक organization, that democratic family, organization, everyone is having equal power, that will be democratic organization. Democratic institutions, family is also institution, so you can say that it's a democratic institution if everyone is having equal power to share their ओपिनियन। और उसके पावर की, उसकी बातों की अगर वैल्यू रखा जाए तो वो डेमोक्रेटिक हो गया। सो डेमोक्रेसी इज आल्सो अ प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। डेमोक्रेसी एक ऐसा प्रिंसिपल है जो किसी भी हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र में अप्लाई किया जा सकता है। Sometimes we use the word democracy not to describe any existing government, but to set up an ideal standard that all democracy must aim to become. कभी कभी हम डेमोक्रेसी का यूज गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि उस आइडियल स्टैंडर्ड को सेटअप करते हैं जो कि डेमोक्रेसी का एम होना चाहिए। ठीक है, जैसे ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू ब्रेड। ट्रू डेमोक्रेसी तभी आएगा जब कोई भी व्यक्ति भूखा पेट अपने पेट पर नहीं जाएगा। It means that poverty we should be completely reduced in the society. Then you can say that is true democracy. And in a democracy, every citizen must be able to play equal role in decision making. For this, you don't need just an equal right to vote. Every citizen need to have equal information, basic education, equal resources, and a lot of commitment. डेमोक्रेसी के अंदर का हर व्यक्ति को इक्वल डिसीजन मेकिंग में इक्वल रोल होना चाहिए। ठीक है, एवरीवन शुड हैव इक्वल रोल इन डिसीजन। और इसमें सिर्फ हमें राइट टू वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि वी शुड हैव इक्वल राइट टू टेक इंफॉर्मेशन। हमें इंफॉर्मेशन पाने का भी अधिकार होना चाहिए। देन बेसिक एजुकेशन शुड बी गिवन टू ईच एंड एवरीवन, इक्वल रिसोर्सेज शुड बी गिवन। ठीक है, इफ these things can be given, then a democracy can be possible. बस एक राइट टू वोट से बात खत्म नहीं होती है, बल्कि इसके साथ साथ लोगों को इंफॉर्मेशन दिया जाना चाहिए, लोगों के साथ राइट टू एजुकेशन मिलना चाहिए, ये सारी चीजें। इफ यू टेक दिस आइडियल सीरियसली, then no country in the world is a democracy. अगर डेमोक्रेसी के इस आइडियल्स को, इस आदर्शों को अगर हम देखें, तो वर्ल्ड का आज के डेट में कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो कि डेमोक्रेटिक है। Yet an understanding of democracy as an idea reminds us why we value democracy. It enables us to judge an existing democracy and identify its weakness. ठीक है, ये जो है अब इसलिए हमको ये समझना होगा कि डेमोक्रेसी का क्या वैल्यू है, आइडियल डेमोक्रेसी का क्या वैल्यू है। तो ये एक जज को ये इनेबल करता है कि जो एग्जिस्टेंट डेमोक्रेसी है उसको जाने, उसके वीकनेस को जाने, डेमोक्रेसी के मेरिट्स भी है, डिमेरिट्स भी है, तो उन सबको वो जाने। इट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिनिमल डेमोक्रेसी एंड ए गुड डेमोक्रेसी। अब आपको क्या समझना है कि मिनिमल डेमोक्रेसी क्या है और गुड डेमोक्रेसी क्या है। मिनिमल डेमोक्रेसी मीन्स सम features is given that must be in a democratic country. If it's there, then you can say that it's a democracy. ठीक है, कम से कम कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि हर डेमोक्रेसी में हो, तब वो डेमोक्रेटिक है, दैट इज मिनिमल डेमोक्रेसी। लेकिन अगर आइडियल सॉरी सो डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी क्या है उसको हम लोग समझें। इन दिस बुक वी डू नॉट डील much with the expanded notion of the democracy. Our focus here is with some core institutional feature of democracy as a form. हमें कुछ ऐसे
इंस्टीट्यूशनल फीचर्स होते हैं डेमोक्रेसी को, जो कि किसी भी एज गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे पाए जाने चाहिए। नेक्स्ट ईयर डेमोक्रेसी कैन बी अप्लाइड इन एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। ठीक है, मैंने अभी आपको बोला कि डेमोक्रेसी कैन बी अप्लाइड इन एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। देखो ये इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है, ये इंस्टीट्यूशंस कहीं भी हो सकता है। मैंने आपको बताया कि द फैमिली और ईच एंड एवरी वन will get equal opportunity to share their opinion and they are having equal value, then that family is democratic family. In any institutions, if any organization, if everyone is having equal power, equal values, then that can be called democratic. So ये ऐसा नहीं है कि किसी कंट्री के साथ ही हो, बल्कि किसी भी इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी होता है। There can be various way of taking decision in a democratic manner, as long as basic principle of consultation or an equal basis is accepted. डेमोक्रेसी का कर बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके आधार पर डिसीजन लिया जा सकता है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल क्या होना चाहिए कि जो भी डिसीजन लिया जाए वो कंसल्टेशन के आधार पर और होना चाहिए, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर डिसीजन होना चाहिए, एंड उसको इक्वल बेसिस पर उसको एक्सेप्टेबल होना चाहिए, सभी के साथ मतलब सब लोग जिस पर सहमत हो उसी को एक्सेप्ट करना चाहिए। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन टुडे वर्ल्ड इज द रूल थ्रू पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। आज के देश में सबसे फेमस जो तरीका है, सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है वो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्टेड डेमोक्रेसी थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इट मींस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, वी shall read more about that in chapter 3. Can you share me the direct example of direct democracy? So if you take the example of rural government, then रूरल गवर्नमेंट, गांव में ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा में जितने भी 18 साल या उससे अधिक मेंबर, अधिक उम्र के लोग होते हैं, वो सारे ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। तो गांव में जितने भी डिसीजंस जो होते हैं, सारे मेजर डिसीजंस दैट इज टेकन बाय द ग्राम सभा। तो ग्राम सभा को डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। ठीक है, गांव में जो ग्राम सभा होती है, सो ग्राम सभा जो है वो सारे ग्राम सभा यानी कि जितने भी गांव के लोग जो 18 और 18 प्लस हैं, वो सब मिल करके गांव के लिए डिसीजंस लेते हैं, और ग्राम पंचायत का काम उसे इम्प्लीमेंट करना होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत ओनली इम्प्लीमेंट द डिसीजन टेकन बाय द gram sabha. So this is the good example of direct democracy in India. In the class I have explained that if the government is run by the elected representative, that you can say indirect democracy. ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। सो अभी मोस्ट ऑफ द कंट्री में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, दैट यू कैन से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। This also means that no country is a perfect democracy. The feature of democracy that we discussed in this chapter provide only the minimum condition of democracy. That does not make an ideal democracy. Whatever features, 4 feature आपने पढ़ा ना, ये चारों features अगर ये मिनिमल कंडीशन है डेमोक्रेसी का। ठीक है, कि डेमोक्रेसी में कम से कम ये चीज है तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जा सकता है। ये फीचर्स के आधार पर हम आइडियल डेमोक्रेसी नहीं कर सकते हैं। सो एवरी डेमोक्रेसी हैज टू ट्राई टू रियलाइज द आइडियल ऑफ democratic decision making. This cannot be achieved once and for all. This requires a constant effort to save and strengthen democratic form of decision making. What we do as citizens can make a difference to making our country more or less democratic. So in every democracy, every democratic are try to make their country ideal डेमोक्रेटिक, लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक कि इसके लिए लगातार प्रयास नहीं किया जाए। ठीक है,
all the country are trying to make their democratic country and ideal into ideal democracy, but ऐसा it cannot be achieved. It cannot be. It's not easy to achieve. So, there is a need to need a constant effort to strong to make a strong democratic form. Uh, so this is the स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में आप स्ट्रेंथ ये है कि ये अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है. डिसीजन मेकिंग जो होता है वो काफी कंसल्टेशन के बाद होता है. सो बेटर डिसीजन इज टेकन इन डेमोक्रेसी. ठीक है. और उसके बाद ये है कि इट रेस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स. ठीक है. These are the features of democracy. And whatever weakness that you are also studied, weakness क्या है कि इस यहाँ पर यहाँ पे अभी भी पॉवर्टी है. ठीक है. और इट्स नॉट ए आइडियल डेमोक्रेसी. इट्स नॉट ए आइडियल डेमोक्रेसी. एंड so for this everyone have to take efforts to make to change the democratic into the minimal democracy to ideal democracy. So the fate of the country depend not just on what the rulers do, but mainly on what we as citizens do. किसी भी country का जो fate है, भाग्य है, वो इस पर डिपेंड नहीं करता कि रूलर्स क्या करते हैं. ये इस पर डिपेंड करता है कि वहां पे रहने वाले सिटीजन्स क्या करते हैं. So this is what distinguishes democracy from other form of government. Other form of government like monarchy, dictatorship, and one-party rule do not require all citizens to take part in politics. Yes, you have studied about the different story of different country, and the country where the one-party system, there is no need of participation of the public. ठीक है. सिटीजन डोंट पार्टिसिपेट इन द मैटर ऑफ द कंट्री. ठीक है. द मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, इसमें जनता का कोई वैल्यू नहीं होता. ठीक है. यहाँ पे जनता का कोई वैल्यू नहीं होता और यहाँ पे वन मैन वन डिसीजंस होते हैं. In fact, most non-democratic government would like citizens not to take part in politics. जहाँ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ लोग चाहते भी नहीं है कि लोग जो है वो इसमें सिटीजन्स जो है वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करे. ठीक है. आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे कंट्री की वर्ल्ड हिस्ट्री आपने पढ़ा, उसमें आपने पढ़ा है कि जनता को कोई अधिकार ही नहीं दिया जाता. बहुत सारे बैन लगा दिए जाते हैं. इसलिए लगा दिए जाते हैं कि जनता का पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो ही नहीं, जनता पॉलिटिक्स में नहीं आए. तो कह रहे कि ये जो मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, वन पार्टी सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि जनता जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है और नहीं उन्हें करने दिया जाता है. So democracy depends upon an active political participation of all the citizens. That's why the study of democracy must focus on democratic politics. So democracy depends on active political participation of all the citizens. ठीक है. There is a requirement of participation of all the citizens and आपने अभी देखा. Mute yourself, Prajakta, I think. So, democracy depend upon the. क्यूट लगती है. So democracy depend upon the total participation of citizens of a country. ठीक है. सिर्फ गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं कर सकती है. जब तक जनता की भागीदारी नहीं हो तब तक कुछ नहीं हो सकता है. ठीक है. If the public, if the citizens will take the effort for the upliftment of the country to make the democracy an ideal democratic country, then
democracy can be converted into ideal democracy, otherwise it's not possible. So students, this chapter has been over, है ना? ये